speech in which the client tends to wander a form of initiated point and never returning to the original idea or original point. जे गोटे क्वेश्चन अच्छी कौन सी गोटे टॉपिक ऊपर आलोचना करा ता माइंड रे कौन थॉट आसला जो विषय आम पचार से विषय तो स्टार्टिंग रे बहुत ताकू जहाँ पचार से कही चलला आ बहुत एक्स्ट्रा जिनस विषय नॉलेज प्रोवाइड कला आ प्रोवाइड करी फाइनली हमको आंसर दबा कथा यदि फाइनल हमको आंसर दे देता से कौन से आम कौन कहता शॉर्ट फॉर्म आंसर किंतु ये फाइनली आंसर देनी कौन लिखी नेवर रिटर्निंग टू द ओरिजिनल आइडिया जो पॉइंट इनिशियल पॉइंट को से केबे भी रिटर्न करनी ताको बाईपास करके आगे बढ़ी जाउची ए कंडीशन को कौन कहबा टेंजेंट सेट ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा फोबिया फोबिया इज साइकोसिस फियर ऑफ एनिमल एंजाइटी और न्यूरोसिस जे फोबिया होची कोन गोटे वन टाइप ऑफ न्यूरोसिस ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन not a selective serotonin reuptake inhibitor तो activity रो कोटा गोटे SSRI ग्रुप रो ओके तो ग्रुप रो ना SSRI ग्रुप रो एक तो फ्लोक्सेटिन फ्लोक्सामाइन ओस्ट्रिपियन आउ सिटालोफाइन ओके तो फर्स्ट भाबो जी SSRI काहे की यूज करबे बेसिकली SSRI कोन एंटी डिप्रेसेंट ऑफ एंटी डिप्रेशन फ्रॉम डिप्रेशन ओके तो ये भीतर एक्सेप्टिंग हाउ फ्लोक्सामाइन और सिटालोफाइन ये सब एसएसआर भी रिसिपिएंट देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द मोस्ट कॉमन सब्सटेंस ऑफ एवरेज इन इंडिया सबसे मोस्ट कॉमन सब्सटेंस एवरेज इंडिया रे कौन एक तो कैनाबिस टोबैको अल्कोहल ओपियम अगर देखिए तो हमें कहया कैनाबिस कैनाबिस होची कोन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस जे कि हमें जो यूज करते कोन ता कोन गंजी ता कोन कैनाबिस ओके तो ये होची मोस्ट कॉमन सब्सटेंस एवरेज इन इंडिया देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज नॉट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एकास्थेसिया एकास्थेसिया कोन एथरे कोन मोटर मूवमेंट पेशेंट रो बॉडी हला ये वन टाइप ऑफ साइड इफेक्ट ऑफ तार टिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग ये होची ईपीएस रा सिम्पटम ओके टिपिकल एंटी साइकोटिक रो साइड इफेक्ट साइकोटिक रो ड्रग रो साइड इफेक्ट ओके तो साइड इफेक्ट रे बेसिकली कौन देखिया मिले ईपीएस सिंड्रोम ईपीएस जाका में कौन कहू ना एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम बेसिकली कहा पाई हुए मोस्ट कॉमन ड्रग्स कहा पाई हालोपेरिडोल ओके तो ये हो कौन ना ईपीएस रो गोटे साइड सिम्पटम जे कि आकास्थेसिया कंडीशन तो आकास्थेसिया रो आमे कौन हम कहि पिरिया जे हालोपेरिडोल ऑलरेडी हम हालोपेरिडोल पाई ए प्रकार साइड इफेक्ट देखौची तो आमे तार ट्रीटमेंट हिसाब रे केमिति आखनबा हम हालोपेरिडोल होची हमें आकास्थेसिया कंडीशन में यूज करबो नेक्स्ट क्वेश्चन द करंट एजेंट ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर अफेक्टिव ओके तो बाइपोलर डिसऑर्डर पाई हम कोन ट्रीटमेंट यूज करे एक तो क्लोरप्रोमाज़ाइन एक तो हालोपेरिडोल देन डायजापाइन एंड लिथियम कार्बोनेट तो ऑलरेडी समस्त जानछो बाइपोलर डिसऑर्डर ये होचे अफेक्टिव डिसऑर्डर जोथरे हमकु मानिक स्टेज देखिए मिले आउ डिप्रेसिव स्टेज देखिए मिले तो येथि पई बेसिकली पेशेंट रो मूड स्टेबलाइजर दरकार तो मूड स्टेबलाइजर किए ना लिथियम कार्बोनेट लेकिन मूड स्टेबलाइजर आउ क्लोरप्रोमाज़ाइन और हालोपेरिडोल ये एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आउ डायजेपाइन होची कार बेंजोडायजेपिन जे कि माइनर ट्रैंक्विलाइजर और सेडेटिव भी कहबे
Okay. Then next question. Most common complication of a modified ECT. Okay. Modify ECT. ECT कौन? इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरापी. जो आम ब्रेन को गोटे छोट सीजर प्रोड्यूस करूँ. ओके. तो बेसिकली कौन कही मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन मॉडिफाई ECT. मॉडिफाई ECT रो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है एमनेसिया. ओके. मॉडिफाई ECT आम कौन करूँ पेशेंट को एनास्थेटिक एजेंट यूज करूँ. एनास्थेटिक एजेंट देगी पेशेंट को गोटे सीजर ब्रेन में तार गोटे सीजर प्रोड्यूस करूँ. बेसिकली एमनेसिया हमारा चांस अच्छी. एमनेसिया रो मीनिंग कौन? लॉस ऑफ मेमोरी. लॉस ऑफ मेमोरी. इतने को प्रकार एमनेसिया बेसिकली देखा मिले एंट्रोग्रेड एमनेसिया जेकी सब टर्म से बर्तमान प्रेजेंट सिचुएशन में जहाँ भी घटी तार किसी मन रही से कंडीशन को कहते एंट्रोग्रेड. आ गोटे अच्छी रेट्रोग्रेड. ए कंडीशन में कौन हुए पेशेंट प्रीवियस पास्ट मेमोरी लॉस. ओके. देन नेक्स्ट देखिए visual analog scale most widely used in measure. जो हमर visual analog scale अच्छी से बेसिकली हम कौन करूँ एक तो देखिए स्लीप पैटर्न सेडेशन पेन इंटेंसिटी डेथ ऑफ एमनेसिया. ये visual analog scale जो हम भास स्केल को तक में पेन रो इंटेंसिटी पे यूज. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो visual hallucination is seen in. ए visual hallucination हम कोते देखिया मिले अल्कोहलिज्म मानिया डिप्रेशन फोबिया. ओके. तो यार राइट आंसर हो कौन हां अल्कोहलिज्म पेशेंट रे visual hallucination देखिया मिले. ओके. देन अल्कोहल विथड्रॉल ले अल्कोहल विथड्रॉल ऑडिटरी hallucination जींस ट्राइपोटाक्स मन रखे समझते. ओके. तो visual hallucination कहछि अल्कोहलिज्म पेशेंट मन के देखियो मिले. ओके. आउ अल्कोहल विथड्रॉल पकरे ऑडिटरी hallucination. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो markedly inappropriate sensitive self importance and suspicious are clinical features. ये क्वेश्चन कोउठ आसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर फर्स्ट हम देखिबा को डिसऑर्डर आसी बा पर्सनालिटी डिसऑर्डर. ये कौन कहछि कौन देछि क्लिनिकल पिक्चर इनएप्रोप्रिएट सेंसिटिव सेल्फ इंपोर्टेंस एंड सस्पिशियस इन नेचर. ये जो सस्पिशियस इन नेचर ये कंडीशन का कहि दिया पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर. ओके. तो सही अनुसार देखिए सीजर्ड पर्सनालिटी डिसऑर्डर माने कोन ना ये सोसाइटी दूरे रहतो मेंटेन डिस्टेंस. और नो रिलेशन का साथ रिलेशन क्रिएट करता. हिस्टोरिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर बेसिकली कौन दिखा है ये होची अटेंशन सीकिंग पर्सनालिटी डिसऑर्डर. एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर बेसिकली कौन है ये बेसिकली मानिक टाइप रहता है. मानिक टाइप को डिसऑर्डर लेकिन एंटी सोशल जो कि बेसिकली हार्म पहुंचे को चेष्टा करते हैं सोसाइटी प्रति. ओके. और इथरे नो गिल्टी पेशेंट कौन प्रकार गिल्टी करे. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एंटी डिप्रेशन ड्रग यूज इन नॉक्टुरनल इन्फ्लुएंस.
जे नॉक्चुरल एनालिसिस पई वो प्रकार एंटीडिप्रेसेंट ड्रग मिले इमिडाप्राइन फ्लोक्सेटिन ट्राइस्टोन सेक्टल ओके तो यार आंसर हो इमिडाप्राइन जे कि टीसीए ग्रुप रो ओ ग्रुप रो टीसी ओके ट्राइसाइक्लिन एंटी डिप्रेशन डिप्रेशन ओके तो बेसिकली कौन होवे नॉक्चुरल एनालिसिस स्पेशल चाइल्ड का नोट देखिए कि तो से कंडीशन राति रे कौन करते बेड वेटिंग कराती से कंडीशन में मिराप्राइन दो देखि से ट्रीटमेंट हिसाब रे यूज देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नॉट ए फीचर्स ऑफ वर्निकेस বা কোষাকফ सिंड्रोम द वर्निक एन्सेफेलोपैथी किंवा कोषाकफ सिंड्रोम ओके तो तारो ये फीचर्स के नहीं एक तो अटैक्सिया साइकोसिस नॉर्मल पीपल रेस्पॉन्स आउ ऑप्थेल्मोप्लाजिया फर्स्ट हम जानिबा ये को प्रकार कंडीशन ये अल्कोहल विथड्रॉल कंडीशन पे खेली वो कंडीशन में अल्कोहल अल्कोहलिक पेशेंट को देखिए मिले जदि बेसिकली कौन हुए ना अल्कोहलिक पेशेंट मान पाखे दुईटा कंडीशन देखा मिले एक तो वर्निक एन्सेफेलोपैथी और कोषाकफ सिंड्रोम ओके तो ये कंडीशन बेसिकली कौन हुए एक तो अटैक्सिया साइकोसिस नॉर्मल पीपल रेस्पॉन्स और ऑप्थेल्मोप्लाजिया देखो फर्स्ट कौन आसीबो एक तो वर्निक एन्सेफेलोपैथी देखो तुमको दुईटा जिनस बुझे दउची ओटा होची आसीबो कोन वर्निक एन्सेफेलोपैथी आउ कोषाकफ सिंड्रोम ओके देख ये बेसिकली एक्यूट स्टेज रे देखिए मिले ना अब ये क्रोनिक स्टेज रे देखिए मिले अल्कोहलिक पेशेंट रो क्रोनिक स्टेज रे देखिए मिले ये एक्यूट स्टेज रे देखिए मिले ओके कौन देखिए मिले यार कौन कौन सिम्पटम एक तो मुंडक केमिति ना गोवा तापरे एस गोरे देखिए ऐसे चलेगा जी फॉर ग्लोबल कंफ्यूजन ऊपर ऑप्थेल्मोप्लाजिया देन अटैक्सिया ओके देन एसी आसला एसी रे कोन फास्ट देखिबा ना अमनेसिया हबो देन कंफाबुलेशन तो ये देखा कि अल्कोहलिक पेशेंट रे देखा जाए वर्निक एन्सेफेलोपैथी और कोषाकफ तो फर्स्ट देखिए एक तो कौन अटैक्सिया प्रेजेंट अछि देन ये वन टाइप ऑफ साइकोसिस कंडीशन भी आउ ऑप्थेल्मोप्लाजिया भी देखिए मिले बेसिकली नॉर्मल पीपल रेस्पॉन्स भी देखिए मिले तो आंसर हम कौन नॉर्मल पीपल रेस्पॉन्स ओके नेक्स्ट देखिए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया इन एडल्ट है गोटे एडल्ट पेशेंट रे डिमेंशिया हवार कारण एक तो अल्जाइमर डिजीज मल्टी इन्फेक्ट एक्स डिजीज मेटाबॉलिक पॉइजन देखो फर्स्ट कौन डिमेंशिया बोलती कौन ना साइकोसिस डिजीज वो प्रकार साइकोसिस ऑर्गेनिक साइकोसिस ओके तो मोस्ट कॉमन कॉज यार कौन हो बहुत सारा कॉज ऊपर बेसिकली हमें जानिए डिमेंशिया रे मीनिंग कौन डिमेंशिया रे बेसिकली लॉस ऑफ मेमोरी विद मेमोरी ऑफ ए व्हाट कॉन्शियसनेस बेसिकली प्रेजेंट है प्रेजेंट ओके तो बेसिकली ये कौन ना अल्जाइमर डिजीज का डिमेंशिया शीघ्र हो मोस्ट कॉमन कॉज यदि कहबा ताला अल्जाइमर डिजीज ओके तो अल्जाइमर डिजीज विषय टिके हल्का जानिबा तो अल्जाइमर डिजीज रे कोन हुए ना प्रोटीन ना बिल्डअप हो ओके प्रोटीन ना ब्रेन तो सेति पई कोन हुए सर्कुलेशन ने
প্রবলেম দেখায় সেই প্রকার কন্ডিশন নিয়ে ডিমেনশিয়া হওয়ার কজেস ইয়ে হচ্ছে ডিমেনশিয়ার কজেস। ওকে, তো কম हुए प्रोटीन बिल्डअप, प्रोटीन बिल्डअप in brain. Okay, then look your next question. Many is character by मैंने भी तो गाने कैरेक्टर पर है ये तीन दिन पूटा एक तो पैराग्नर डिलीजन लॉस ऑफ ओरिएंटेशन हाई सेल्फ एस्टीम फर्स्ट पैराग्नर डिलीजन लिखे हुए माने प्रेजेंट अगर देन लॉस ऑफ ओरिएंटेशन पेशेंट ओरिएंटेशन भी लॉस हुई और हाई सेल्फ एस्टीम निजर विश्वास बहुत अधिक निज ऊपर विश्वास था এই প্রকারে এর आंसर হবে অপশন ডি ঠিক আছে। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, lithium is treatment of choice for तो lithium का ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस कहाँ पे नवा एक तो यूनिपोलर एमडीपी प्रोफाइलाइसिस बाइपोलर एमडीपी प्रोफाइलाइसिस और सिजोफ्रेनिया और एक्यूट माइग्रेन। ओके, तो बेसिकली लिथियम का मैं कौन करूँ ना मूड स्टेबलाइजर ये होची गोटे कोन ना मूड स्टेबलाइजर। ओके, तो बेसिकली हमें को कंडीशन में दो बाइपोलर को कंडीशन मानिया कैसे। ओके, तो हमें कह करिया बाइपोलर डिसऑर्डर ड्रग ऑफ प्रोफाइलाइसिस ऑप्शन बी then right answer. Then next here, feature like increase psychomotor activity, axis flexibility are the type are seen in the classical age. The patient अगर कौन दिखाची psychomotor activity increase की दिखाची axis flexibility दिखाई अच्छी आउ अगला सीन को classically अपन को कहबा catatonic seizure. ओके, तो ये सी catatonic seizure के नियर classical features. The next question देखिए, catatonia is a type of gas, schizophrenia, phobia, depression, oversleep. तो catatonic कौन ना ये होची schizophrenia रे टाइप्स टाइप ऑफ schizophrenia. ओके, ये होची schizophrenia रे गोटे टाइप्स। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, suicidal tendency are most commonly seen in suicidal tendency कहाँ पर बेसी देखने मिले एक तो मेल और फीमेल तुलना में फीमेल माने तो अधिक देखने मिले ये आंसर ठीक। यंग एज माने गोटे देखने मिले यंग एज भी देखते हाउ सीवियर डिप्रेशन बेसिकली सीवियर डिप्रेशन भी देखने मिले ये आंसर में और ओके। एंड देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, illusion is the illusion of a false unsustainable belief not keeping one's socio-cultural background. Perception without stimuli, abnormal perception by a sensory misinterpretation of actual stimulation. A proper condition option C there होती right answer. Next question देखो, which of the following is not associated with dementia? The अभी तो पूरा dementia associated है। Forgetfulness, alter of consciousness, reduced personal care, loss of a neuron in brain. Forgetfulness basically तो देखा जाए alter level of consciousness ये basically delirium में देखी जाती delirium condition. Reduced personal care लिखा गया okay. Then loss of a neuron in the brain. Basically, dementia देखी होगी। तो their answer होगी reduce alter of a consciousness. ये dementia पीरियड। Next question देखो, for diagnosis of a mania, symptoms should be mania symptom को हमने देखी कि तब diagnosis करेंगे कितने सप्ताह 1 weeks, 3 weeks, 2 weeks and 4 weeks. यानी तो once. Okay. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाँ जदि डिप्रेशन था डिप्रेशन होता मेडिकल 2 weeks. Okay, take on next question. True about the anorexia nervosa is all except the through anorexia nervosa total being eating is common. If you're male, unknown in male, you know, the next to common, the being eating in common, that's being eating in देखा जाएगा मेरा आंसर होगी ऑप्शन है ओके नेक्स्ट loosening of accession is the example of a third degree how cinders have present symptoms which are mentioned how concretely इसका लिखे not formal thought disorder using types right now okay Fits and changes in emotion in without any stimulation is called जे गोटे पेशेंट रो इमोशन रैपिडली चेंज होची गोटे इमोशन रो आ गोटे इमोशन को चेंज होची कोन प्रकार स्टिमुलेशन नै से प्रकार कंडीशन को हम कहया लावाइल अफेक्ट पेशेंट रो कोन हुए लावाइल अफेक्ट रे तो वर्तमान पेशेंट खुशी थिबो संगे संगे दुख होबो दुख करिवो किबा कांदिबो से प्रकार कंडीशन को हम कहया लावाइल अफेक्ट ओके देन एनिडोनिया ऊपर ऑलरेडी पढ़ी छे अलेक्साइमिया not express its emotion. तो कौन होगा? Like not express its emotion. It's like or emotion. जे निजर इमोशन को एक्सप्रेस करि परिबो ना. इन कॉम्प्लेक्स अफेक्ट कोन ना ऑपोजिट. ऑपोजिट सिचुएशन. सिचुएशन So, means तो कौन हम ना पेशेंट जदि कौन प्रकार कौन व्यक्ति डेथ कर जाइछथि तो पेशेंट सेठी जाकी हसी हसी कथा देखि तो सिचुएशन अनुसार से अपोजिट रे प्रकार इमोशन शो करियो से कंडीशन को इनकॉन्ग्रुएंस अफेक्ट कर दे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इमोशन इज समथिंग दैट विल बी ऑब्जर्व बाय डॉक्टर्स एंड बाय एक्सटर्नल जो पेशेंट रे इमोशन प्रेजेंट अछि ताको ऑब्जर्व करछथि डॉक्टर्स ऑब्जर्व करछथि जे ताको हम जो एक्सटर्नल देखा अछि से प्रकार कंडीशन को कहबा हमें अफेक्ट जदि इंटरनल ही थांता तो हम ताको कहि थांते मूड ओके तो एठी जेहेतु अछि एक्सटर्नल तो से प्रकार कंडीशन आ ऑब्जर्व करि होय से प्रकार कंडीशन को कहबा अफेक्ट ओके अफेक्ट रे कोन होबो एक तो फर्स्ट देखो एक तो एक्सटर्नल थिबो इमोशन ता तार आउ ऑब्जर्वेबल करि हबो आउ शॉर्ट टर्म इमोशन प्रेजेंट राइट गotcha okay then next question which of the following is a formal thought disorder जे या भितरु जे थॉट रो जो टाइप्स अछि ता भितर एथि मधुर कोटा फॉर्मल थॉट डिजॉर्डर ओके थॉट रो पका के चारटा टाइप्स अछि ता हम देखिबा फर्स्ट थॉट रो देखो हां ना फ्लो एंड स्टीम लेवल इनटू फर्स्ट सेकंड कंटेंट लेवल थर्ड formation level fourth position level ओके तो थॉट इंसर्शन ये हमर पोजीशन लेवल ले आसी जीवो डिल्यूजन बेसिकली कंटेंट लेवल ले आसी जीवो ओके देन फ्लाइट ऑफ आइडिया ये फ्लो वन स्टीम लेवल आसी जीवो डी एलिमेंट जे कि हमर फॉर्मेशन लेवल आसी ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ए पेशेंट कहूची होम इज स्वीट इन diabetes even has sweet is hell
व्हाट इज द सिम्पटम जे पेशेंट एक तो कौन कहूँ जे तार ये कौन हूँ आइडिया पेशेंट थॉट गोटे थॉट रु गोटे थॉट बहुत रैपिडली शिफ्ट होची आउ भितर मिनिमम कनेक्शन अच्छी से प्रकार कंडीशन को आम कौन कहवा ना फ्लाइट पाइबे ओके देन लूजिंग ऑफ एक्शन कौन हम ना एक तो रैपिडली शिफ्ट हम गोटे थॉट रु गोटे थॉट किंतु भितर कौन लॉजिकल कनेक्शन नथिबो आ वर्ड सलाड रे बहुत गुटे वर्ड को मिक्स करला परे जो पैराग्राफ तैयार करिवो से पैराग्राफ रो किछि मीनिंग ही नथिबो से प्रकार कंडीशन को वर्ड सलाड कहते क्लेंज एसोसिएशन हम ऑलरेडी बारंबार पढ़िचे जे राइमिंग थ्रो रे ता माइंडफुल थॉट आसे देन नेक्स्ट क्वेश्चन एक पेशेंट एक्सपीरियंस ऑफ मानिया से वी कैन पैन रैन प्लान दिस कैन इज आइडेंटिफाई जो पेशेंट अच्छी से कौन कहूँ ना वी कैन पैन रैन प्लान तो ये को प्रकार टर्मिनोलॉजी को इंडिकेट करिवो एक तो क्लेंज एसोसिएशन एक तो इकोलालिया एक तो इलेशन देन वर्ड सलाड ये तो फर्स्ट वर्ड सलाड हबनी ओके देन इलेशन भी हबनी इकोलालिया हबनी ये राइमिंग बोलिया थॉट आछे माइंड तो यार आंसर हो कोन ना क्लेंज आसबनी ओके इकोलालिया जदि हम डेफिनेशन करबे कोन ना इकोलालिया रिपीटेशन of a word to another person रो कथा को यदि बारंबार रिपीटेशन करूची ताको हम कहबा इकोलालिया इलेशन होची कोन extremely happy without reason इस प्रकार कारण तो एक्सट्रीम हैप्पी एंड इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी तार एक्टिविटी भी इंक्रीज है देन वर्ड सलाड ऑलरेडी सब जानि छ जे मिक्सिंग ऑफ वर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हेन द पर्सन लुक्स इन द मिरर एंड सीन नो वन ऑलरेडी हमें ऊपर ए बलिया क्वेश्चन करके आस्तले ताको हम डायरेक्ट कहि परिया होची ऑटोस्कोपिक hallucination then next question is if the person living in Delhi the person achi Delhi re rahuchi claim करछि that he can hear a voice his friend who is living in the US okay से गोटे पेशेंट अछि जे दिल्ली रे रहउछि से कुछ मो संग रो टोन बटन सुनिबे किंतु सी अमेरिका रे यूएसए रे रहउछि ओके से ये को प्रकार हालुसिनेशन पचारि एक तो रिफ्लेक्स हालुसिनेशन एक तो एक्स्ट्रा कैंपेनिंग हालुसिनेशन ऑटोस्कोपिक हालुसिनेशन मॉर्बिड सिंथेसिस ओके देन फर्स्ट देखो रिफ्लेक्स हालुसिनेशन होबनी कारण रिफ्लेक्स हालुसिनेशन में गोटे पर्टिकुलर सराउंडिंग भीतर एते स्टिमुलेशन प्रेजेंट थाए कि एते कोन प्रकार स्टिमुलेशन नाही तो हम आकु डायरेक्ट काटि दे परिया देन ऑटोस्कोपिक हालुसिनेशन हम ऊपर जेमिति आंसर देले ये भी ऑटोस्कोपिक हालुसिनेशन होबनी आ मॉर्बिड भी होबो नाही ये हो एक्स्ट्रा कैंपेनिंग हालुसिनेशन एक्स्ट्रा कैंपेनिंग हालुसिनेशन कोन होय जे तार सराउंडिंग भीतर किछ नथिबो एक्स्ट्रा माने एक्स्ट्रा है कि हला तो सराउंडिंग तो अधिक ऊपर थिबो से प्रकार कंडीशन को हमें कहया हालुसिनेशन एक्स्ट्रा कैंपेनिंग हालुसिनेशन जे कोन हेतिबो ना हालुसिनेशन जो क्रिएट होतो तार सेंसरी फील्ड रेंज भीतर नथिबो ओके जो हालुसिनेशन ता क्रिएट होची तार सेंसरी फील्ड भीतर नथिबो से प्रकार कंडीशन को हमें कहया एक्स्ट्रा कैंपेनिंग हालुसिनेशन then next question देखिए if a person say that he can see a person in his mind and that is out of his control it is जो गोटे पर्सन कहूची जे से गोटे पर्सन को देखिला किंतु ता माइंड रे देखिला किंतु से ताकू से जिंसटा को कंट्रोल करिया चेष्टा करची तो पारो तो से प्रकार हालुसिनेशन को हम को कहबा फर्स्ट इल्यूजन ऑफ कंट्रोल हालुसिनेशन विजुअल हालुसिनेशन और सूडो हालुसिनेशन तो सूडो हालुसिनेशन ये आंसर हो सूडो हालुसिनेशन सूडो माने फॉल्स हालुसिनेशन तो सूडो हालुसिनेशन में गोटे जिंस ध्यान रखिबो एटी पेशेंट रो इनसाइड प्रेजेंट था इनसाइड प्रेजेंट तापरे भी हालुसिनेशन आसे जे पेशेंट ऑलरेडी जानिची कोन ना गोटे पर्सन लो साउंड जो पर्सन को से देखिला
अलरेडी से जानछि जे मु कोन प्रकार पर्सन को देखिनी किंतु ताको हालुसिनेशन क्रिएट होछि अलरेडी तार अवेयरनेस अछि ओके तो एठी भी पेशेंट कहबो मे बी मु किछि भूल भी देखि थै पारे तो से प्रकार कंडीशन को हम कहबा सूडो हालुसिनेशन जे कि फर्स्ट इंपोर्टेंट थिंग होला इनसाइड द पेशेंट प्रेजेंट थिबो पेशेंट अवेयरनेस थिबो जे हां मु किछि भूल भी देखि दे पारे ओके तथापि तो पाखु हालुसिनेशन देखा जाउछि ताको हम कहबा सूडो हालुसिनेशन ऑफ फॉल्स हालुसिनेशन नेक्स्ट if a person wake up at night गोटे पर्सन थिला सडन रात रे उठी गला आ कोन कहूछि से he see a person standing behind the window after switching the light it is actually the curtain ओके तो गोटे पेशेंट अछि को कहूछि सडन रात रे त निद भांगी गला आ से उठी के स्टैंडिंग देखिला कि विंडो पाखरे गोटे पर्सन थिया अछि ओके देन आफ्टर स्विचिंग द लाइट तो स्विच ऑन कर गला इट इज एक्चुअली ए कर्टन ये होछि गुटे परदा एही प्रकार कंडीशन को हम कोन कहया विजारेट इल्यूजन नॉन विजारेट इल्यूजन इल्यूजन आउ डिसीजन तो एही प्रकार कंडीशन को हम कहती इल्यूजन दे इल्यूजन कोन ना ये फॉल्स परसेप्शन इन प्रेजेंट of stimulation जी होची वन टाइप ऑफ फॉल्स परसेप्शन टू स्टिमुलेशन प्रेजेंट है ओके तो से कंडीशन को हम कहबा इल्यूजन जेंति कि पर्दा अछि ताके देखि कि गोटे मैन बोली पर्सन भाबुची त से प्रकार कॉन्सेप्ट इल्यूजन रे नेक्स्ट क्वेश्चन these are delusion that are scientifically impossible or culturally impossible तो एक तो विजारेट इल्यूजन नॉन विजारेट इल्यूजन काबलास डिल्यूजन डिल्यूजन ऑफ मिसआइडेंटिफिकेशन जे डिल्यूजन ऑफ मिसआइडेंटिफिकेशन भितरे काबलास डिल्यूजन भी आसे तने एथरे बेसिकली पर्सन को मिस आइडेंटिफाई करिमु ता पाखे थिबा पर्सन जे निजर फैमिली मेंबर हो कि ता फ्रेंड्स हो ताको मिस आइडेंटिफाई करिमु तो से प्रकार कंडीशन को हमें डिल्यूजन ऑफ मिस आइडेंटिफिकेशन कहया तमे ये आंसर होबनी ये भी तारा पार्ट होची काबलास हालुसिनेशन होची मिस आइडेंटिफिकेशन डिल्यूजन रो एक पार्ट ये भी होबनी आ पाखे दुईटा कंडीशन आसे एक तो विजारेट इल्यूजन एक तो नॉन विजारेट इल्यूजन कोन होबो एक तो हमें कोन से प्रकार साइंटिफिकली प्रूव कर परबेनी कि कल्चरली प्रूव कर परबेनी नॉन विजारेट इल्यूजन ने हमें साइंटिफिकली कोन कर परबे ना पॉसिबल कर परबे साइंटिफिकली पॉसिबल हे पारे साइंटिफिक पॉसिबल वर्क culturally maybe जबकि विचार इंटेलिजेंस में गोटे एग्जांपल देबी जे गोटे पर्सन कोच कोन गोटे एलियन आसिला आ ता माइंड रे गोटे ता मुंड भीतर गोटे चिप पुरे देला इंसेशन कर देला हला आ ता बॉडी को कंट्रोल करे चेष्टा आ ता बॉडी रे सब एक्टिविटी को चेक करथे चेक करिया ओके तो सही प्रकार कंडीशन को हमें कहि परिया विचार इंटेलिजेंस तो विचार इंटेलिजेंस या को हमें साइंटिफिकली भी प्रूव कर परबेनी आ कोनसी कल्चरल भी प्रूव कर परबेनी यदि नॉन विचार इंटेलिजेंस ने गोटे एग्जांपल देखबा जे कोन ना गोटे पर्सन अछि ड्रिंक करूची ताकू जदि पचार जाय काहे कि ड्रिंक करची से कोची मो पेट रे थवा माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब डेथ हेजबे ड्रिंक करिया द्वारा तनु या को हमें तो कोनसी प्रकार साइंटिफिकली पॉसिबल हे पारे किंतु कल्चरली कोनसी पॉसिबल हेबन ओके देन नेक्स्ट there is sudden arrest of thought but beginning thought is normal and the person begin with an entirely new idea which condition is the person कहछि तार जो माइंड के जो थॉट आस्ती से सडनली स्टॉप हे गला हैला किंतु तार बिगिनिंग तो नॉर्मल थिला ओके ये सडन थॉट को स्टॉप हे गला तो से प्रकार कंडीशन को असी ताको बैलेंस करे पई न्यू आइडिया किछि करिकि से थॉट को बैलेंस कर तो से प्रकार कंडीशन को कोन कहै एक तो थॉट रिटार्डेशन थॉट इंसेंसिटिविटी थॉट प्रिजर्वेशन आउ थॉट ब्लॉक ऑलरेडी तुम भाबो जे थॉट गुड माइंड का आछि सडन थॉट स्टॉप हो जाय तो सेही प्रकार कंडीशन का कोन कहै थॉट ब्लॉक हला थॉट रिटार्डेशन हम ऊपर पढ़थिले जे बारंबार तक बारंबार जे कोनसी गोटे माइंड की जो थॉट आछि से बारंबार त माइंड रिटार्ड हो जाय तो बारंबार हम स्टिमुलेशन प्रोवाइड कला परे ता माइंड रे गोटे थॉट रहउछि जे कि से
आंसर दउछि सर्कमस्टेंशियलिटी माने जे एक्स्ट्रा जिंस एक तो हमें ताको कोन हबो से सर्कमस्टेंशियलिटी सर्कमस्टेंशियलिटी कोन ना ये गोटे सर्कम ओके तो आम पेसेंट को गोटे पर्टिकुलर टॉपिक विषय जो पचारे जेकोसी गोटे टॉपिक विषय पचारे तो ये तार आंसर न देकी बहुत सारा एक तो विषय किसी स्टार्टिंग पॉइंट रू कहूँ और बहुत सारा एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड कर पेसेंट भितर आ फाइनाली रिच कर जगह जाए फाइनाली तार जो क्वेश्चन पचर तार आंसर दे तो से प्रकार कंडीशन को आम कह सर्कमस्टेंशियल आउ गोटे आसिला थॉट प्रिजर्वेशन थॉट प्रिजर्वेशन इज अपोजिट ऑफ थॉट रिटायरेशन कौन होता जे बारंबार स्टिमुलेशन देला परे ता माइंड गोटे थॉट आसुई किंतु एठी थॉट प्रिजर्व होई जो ता माइंड जो थॉट आस्तिबो सेटा प्रिजर्व होई कि रहिबो हला से गोटाए थॉट ही प्रिजर्व होई कि रहिबो तो आमे तो चाहा भी क्वेश्चन पचारा जेंति कि पचारे कि व्हाट इज योर नेम से कह माय नेम इज राम व्हाट इज योर फादर नेम ना राम मदर्स नेम राम चाहा भी पचारे से गोटाए ही आंसर दबो तो एथिल थॉट कोन है प्रिजर्व होई कि माने स्टोर होई कि रहिबो okay then next question देखिए a person have thought problem which rapidly or very quickly shifting one idea to another idea with have minimum connection जो ऊपर ऑलरेडी बड़ा क्वेश्चन हम करछे तने प्रकार कंडीशन को हम कहया loosening of sorry flight of idea जे minimum connection है यदि loosening of association कहैतला no connection next question the short time emotional response in which person express emotion to an idea terms जे कौन है जे पर्सन जो इमोशन ता अछि बहुत शॉर्ट टाइम रा अछि आ ये सब्जेक्टिव प्रोसेस रे पहुंच तो ई प्रकार कंडीशन को हम कहि परिया अफेक्ट ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन टा बड़ अच्छी कि मीनिंग बुझे चेष्टा करू ए 33 इयर्स ओल्ड गोटे 33 वर्ष लोक अच्छी मेल पर्सन हु इज ट्रैवलिंग बाय ए फ्लाइट से फ्लाइट रे ट्रैवलिंग करछि स्टार्टेड फ्लाइट विथ ऑन ऑफ द एयर होस्टेस जे फ्लाइट भीतर गला से गोटे एयर होस्टेस को देखिला आ द मैन कहूछि कि दैट इज द एयर होस्टेस इज एक्चुअली हिज वाइफ एंड शी हैज चेंज हर फेस so that she cannot identify. This history is consistent. ये फर्स्ट आपको हमें कोई क्रिया ये होची delusion of misidentification. अगला क्वेश्चन ना delusion of misidentification. Yes, identity. Yes. Okay, misidentification ने हम पक्का कि आसी जाए कौन ना एक तो का class delusion, frequently syndrome आपण ना सब्जेक्टिव टेबल डिलीजन तो एठी हम पाखरे अछि दुईटा आंसर एक तो कैप्गस डिलीजन बा कैप्गस सिंड्रोम जहा हम कहूचे फ्रीक्वेंटली सिंड्रोम बा फ्रीक्वेंटली डिलीजन कहि करिया हला तो ई दुईटा का हम पाखरे आंसर हे परबो ई दुईटा को ओथल सिंड्रोम आउ क्लिम्बर वॉल्ट सिंड्रोम हम दुईटा को काटि परबो तो कैप्गस सिंड्रोम और फ्रीक्वेंटली सिंड्रोम कैप्गस सिंड्रोम को कहंगे ते पेशेंट कहबो क्लोज पर्सन की रिप्लेस कर देछि ते कोन ना क्लोज पर्सन रिप्लेस करा है क्लोज पर्सन रिप्लेस करा है माने कोन एग्जांपल हम गोटे दबा ते गोटे स्टूडेंट अछि तो से क्लासरूम को गला तो तार बेस्ट फ्रेंड को देखिला ता बेस्ट फ्रेंड को देखि कहूची जे ये मो बेस्ट फ्रेंड हो ई मो बेस्ट फ्रेंड बढ़िया चेहरा यार ई मो बेस्ट फ्रेंड बढ़िया एक्टिविटी करछि किंतु ये रियली वो बेस्ट फ्रेंड नो से प्रकार कंडीशन को हम कास्पिरस सिंड्रोम कहि गया फ्री गोली सिंड्रोम ने फ्री रे गोली देकी पटेगा की चेष्टा करछि जे अननोन व्यक्ति की देखि कहूची जे ये मोर निज लोक बोली तो जेमति के एथि कोन ना व्यक्ति कोन कहूची ना एयर होस्टेस को देखि कहूची जे की तार वाइफ ओके तो याकू कोन कहबे ना फ्री गोली सिंड्रोम जे फ्री रे गोली देकी एयर होस्टेस को पटेगा की चेष्टा करछि तो ए प्रकार कंडीशन कहती फ्री गोली सिंड्रोम देन नेक्स्ट क्वेश्चन the person is believed that someone who closely related to him he has been replaced by an exact double which delusion seen in this person okay the condition है कौन कही जे तार क्लोज पर्सन को रिप्लेस करा जायछि एन ऑलरेडी हमें ऊपर डिस्कशन करछे से प्रकार कंडीशन कौन कहबा
ক্যাপগ্রাফ ডেলিশন। সোমাটিক ডেলিশন মানে কোনো বডি রিলেটেড ডেলিশন, বডি রিলেটেড। দেন ডিলিশন অফ misidentification, ये होती misidentification of part of a capgras डिलीजन। तो ये आंसर होगा ना capgras डेलिशन।